Hello everyone and welcome to the webinar. Today we are conducting this webinar on a specific topic. It's an industry specific topic that is transport business. तो इस webinar में मैं I will try to communicate in both Hindi and English so that it could understood to all of you. And आज के वेबिनार पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट या क्या चैलेंजेस आते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस है क्या, हाउ वी कैन implement the requirement of transport business in busy, or how busy gets suits for transport business, what are the features we can use in busy to get implement in the transport business segment. So पूरी जो overview है related to transport business, the requirement challenges, the implementation process will go through on this webinar. स्टार्ट करते हैं with the session objectives. So आज का जो session objectives, let's have a quick look on the session objectives. First is the introduction. What is transport business? What we mean by transport business, we'll understand that first. We'll go through the requirement and the challenges that we face in the transport business industry. We'll see the features and the solutions that Busy will provide for the transport business industry. And we'll also look practically the implementation portion in Busy. Then we'll go through the generation of invoice and we'll check the invoice format also. The related reports, जो भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस के रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होते हैं उसको हम लोग गो थ्रू करेंगे. विल गो थ्रू विद द रिलेटेड रिपोर्ट्स अलोंग विद द सैंपल डेटा. And at the end, there will be a QA session. You can raise your questions in the QA chat box and we will be happy to reply on that. So first coming on the introduction part. So what we mean by a transportation business? Transportation business है क्या? So basically the transportation industry sectors comprises a wide range of service providers covering all mode of transport. It may be through air, it may be through road, or it may be by rail or sea as well. As related to service such as warehousing, handling, it make it possible to move good from the place of production to the place of where they are to be consumed. सो ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो है एक तरह का आप लॉजिस्टिक बिजनेस समझ लीजिए, जिससे हम जो भी गुड्स है उसकी मूवमेंट हम करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे वाया रोड, वाया व्हीकल्स, जो भी व्हीकल्स आप यूज़ करते हैं. सो जो आप लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं या मूवमेंट करते हैं अपने कस्टमर्स की प्रोडक्ट्स को, तो उस पर आप अपने जो है सर्विस लेते हैं. ठीक है, तो that kind of industry basically go through with this features called warehouse handling, or you can say movement of goods from one location to another locations and take the service charge, the freight charges. Okay, coming on the requirement and the challenges. The basic requirement you can say, or the challenges that we get to know in the transport business, that is the vehicle management first of all, or you can say the logistic management. So different vehicles या आपके multiple vehicles हो सकते हैं जिसके थ्रू आप goods जो है मूवमेंट कराते हैं, तो आप अपने vehicle masters मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, तो वो एक रिक्वायरमेंट रहती है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, तो वो जो है हमारे बिजी में आप मेंटेन कर सकते हैं. विल लुक आउट प्रैक्टिकली इन बिजी ऑल्सो. डेली ट्रिप एंट्री जो बेसिकली होती है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में वी सपोज टू सी दैट if a customer is giving you an rights to share the goods from one location to another location, in that case you charge a freight for the movement of the goods from one location to another location. That is the transportation charges, or you can say the freight charges. So एक पर्टिकुलरली एक कस्टमर की आपके दिन में हो सकते हैं 2-3 बार आपने गुड्स मूवमेंट कराया है, दैट इज कॉल्ड द डेली ट्रिप.
So you can have this requirement in your transport business that कि आपको दिन भर जो भी आप मूवमेंट करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, सो दैट इन टर्म्स इसको कहते हैं हम लोग डेली ट्रिप एंट्री। बेसिकली जो बेसिक टर्म्स है उसको हम लोग बोलते हैं डेली ट्रिप एंट्री। तो जिससे आप जो है अपनी गुड्स को जो एक जगह से दूसरे जगह में मूवमेंट करते हैं, लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, और पर्टिकुलर कस्टमर की हो सकते हैं, मल्टीपल कस्टमर्स की हो सकते हैं, ठीक है। फाइनल बिल रेज करते हैं डेली ट्रिप एंट्री के अगेंस्ट पे। दैट मीन्स once you generate your daily trip entry, you need to convert that daily trip entry in your final bill. That means if you are generating a daily trip entry in a day for a particular customer, maybe you are generating a daily trip entry, it may be a 2 entry, it may be a 3 trip entry, so you want to convert that entire trip entries in a single bill. So आप सिंगल बिल जनरेट करना चाहते हैं एक ट्रिप एंट्रीज के अगेंस्ट पे, पर्टिकुलर कस्टमर के अगेंस्ट पे, ठीक है, फाइनल बिल रेज करना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट इन द ट्रांसपोर्ट बिजनेस। e-way bill management, so you need to generate your e-way bill whenever you are going to do the movement of goods. We need a e-way bill, or a transport business operations need a e-way bill management while transferring the material from one godown to another godown, or from one location to another location for a customer. So e-way bill management is also an important features that is needed for the transport business industry. Vehicle wise expenses record, that means uh, if you have multiple logistics or multiple vehicles, you need to maintain a record that against which vehicle what expenses that has occurred. That means कोई vehicle में आपका जो है इस पे आपकी कोई पेट्रोल या डीजल चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, या कुछ व्हीकल्स में रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, तो आपको मेंटेन करनी होती है व्हीकल वाइज क्या एक्सपेंसेस आप चाहते हैं रिकॉर्ड रखना। तो ये भी एक चैलेंजेस या एक रिक्वायरमेंट रहती है ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे, ठीक है, व्हीकल वाइज आप एक्सपेंसेस मेंटेन करने का। पार्टी या बिल वाइज आउटस्टैंडिंग जैसे बोलते हैं, फाइनल बिल रेज करने के बाद आपको अगर ट्रांसपोर्ट में जैसे कस्टमर वाइज आपको देखनी है किस किस कस्टमर का कितना फ्रेट ड्यू है, कौन से बिल के अगेंस्ट पे, तो वो आप मेंटेन कर सकते हैं या उसकी रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट बिजनेस इंडस्ट्री में। सो अगर हम फीचर्स एंड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करें, इफ वी डिस्कस अबाउट द फीचर्स एंड सॉल्यूशंस दैट वी कैन गेट इन बिजी, so first is the cost center management. So if I say that if you are going to use the cost center as a vehicle master creation part, that means कि आप cost center को as a vehicle master creation part maintain कर सकते हैं। आप cost center में अपना vehicle master create कर सकते हैं, क्योंकि बिजी में क्या होती है कि आप कोई भी एक्सपेंसेस या परचेज या पेमेंट या कोई भी आप एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, तो आप कॉस्ट सेंटर वाइज अमाउंट जो है एलोकेट कर सकते हैं। तो इससे आपको व्हीकल, अगर आप कॉस्ट सेंटर को एजम्पशन करते हैं एज अ व्हीकल नंबर, देन यू कैन ट्रैक दी व्हीकल वाइज expenses as well as income also. Next is the voucher series configuration. Why voucher series configuration is needed? Because in transport business we find out that in transaction there are multiple information needed. Whenever you generate a daily trip entry or you generate a bill, you need some multiple extra information like loading station, unloading station, permit number, weight, serial number, all these options or all this information you can create from the voucher series configuration. In voucher series configuration, you can use the item description field, or you can use the voucher optional field to create your extra field in your transaction. Okay, so that you can print out in your invoice or in your daily trip format. Challan management. Now you can use daily trip entry or you can convert your daily trip entry in challan management features. That means कि आप जो बेसिक का जो चलान एंट्री मॉड्यूल है उसको आप एज ए डेली ट्रिप समझ लीजिए कि आप उस एंट्री मॉड्यूल को आप डेली ट्रिप एंट्री के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं बेसिक में। तो आपके डे टू डे में दिन भर जो भी आप मूवमेंट करा रहे हैं गुड्स आपके कस्टमर्स के, तो आप चलान के माध्यम से करा सकते हैं। एंड फ्रॉम चलान यू कैन जनरेट योर ई वे बिल ऑल्सो। ओके, सो आप एक तरह का जैसे कि आप
आपके पास मल्टीपल व्हीकल्स हैं, तो आप एक कस्टमर को आज एक व्हीकल नंबर के अगेंस्ट पे आपने लोडिंग करा दी या मूवमेंट करा दी गुड्स, उसी दिन या उसके दूसरे दिन आप उसी कस्टमर का आपने दूसरा लोडिंग का एंट्री कर लिया चालान पे दूसरे व्हीकल नंबर से, तो आप व्हीकल वाइज आप जो है ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं चालान पे, और आप मल्टीपल व्हीकल के अगेंस्ट पे भी फाइनल बिल रेज कर सकते हो। फाइनल बिल से अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। So from if you pick the daily trip entries in your final bill, from there also you can generate your e-way bill against multiple vehicle number. Okay, so in daily trip or in challan management also you can generate your e-way bill for a particular vehicle number or against a particular vehicle number. Also, if you want to get a consolidated or you want to generate a consolidated invoice against a daily trip or against a challan entry, and you need to generate your e-way bill from that final bill, then you can also do it from Busy. Sales transaction against challan, that means the final bill. If you need to adjust your challan or the daily trip entry in your final bill, then you can pick the challan entry in your sale bill. Also, advance invoice format, that means in Busy we are having an advance invoice format. This will help you to implement the invoice according to the need of your business or need of your industry. आप जैसे आपके ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में आप देखेंगे कि आपको परमिट नंबर, चलान नंबर, ये सब इनवॉइस में प्रिंट कराना होता है, ठीक है। सो दीज आर एडिशनल फील्ड्स दैट यू कैन incorporate in your invoice format. So in Busy we are having the advanced invoice designing option, from where you can configure the invoice format also according to the requirement. E-way bill management, so you need to configure the e-way bill system in your data also, because if you need to generate your challan or if you need to generate your final bill, then from there also you can generate your e-way bill. So in Busy you will get an auto e-way bill option. सो आप ऑटोमेटिक ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं आपके डेली ट्रिप से, या फाइनल बिल के अगेंस्ट पे भी कर सकते हैं। सो ई वे बिल मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन इन Busy that you can use for your transportation business. Payment vouchers, this is needed for maintaining of expenses record against a particular vehicle number. That means if you are going to record expenses which are related to petrol expenses or any repairing expenses, vehicle repairing expenses, so you can record that from payment voucher, and you can also allocate that amount to the particular vehicle number through cost center. Okay, so आप देखोगे कि Busy में अगर पेमेंट वाउचर आप एंट्री करते हैं तो वहां पर भी कॉस्ट सेंटर का बॉक्स ओपन होता है, बिकॉज यू आर यूजिंग कॉस्ट सेंटर एज अ व्हीकल मास्टर। सो आप कॉस्ट सेंटर वाइज या व्हीकल वाइज आप पेमेंट की जो अमाउंट है उसको एलोकेट कर सकते हैं, एंड एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन आप अगर रिपोर्ट देखना चाहें या आप ट्रैक करना चाहें व्हीकल वाइज क्या खर्चे हुए हैं, पेमेंट हुए हैं वाउचर्स, तो यू कैन ऑल्सो ट्रैक फ्रॉम कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट. Outstanding analysis, that means this is the basic accounting need to get the bill wise outstanding report for a particular customer or for a group of customers कि कितने freight due है, किस पार्टी से कितना freight due है, तो you can also get it tracked from the outstanding analysis report. Now let's see practically in Busy how we can implement or how we can use the features related to the transport business. First of all, as I say is कि आप vehicle masters, जो भी आप vehicles, आपके जो भी vehicles है, अगर आपको vehicle create करनी है, so you have to use the cost center, or you can use the cost center features in Busy to create your vehicle master. So for that you have to enable the cost center from administration, configuration, features and options, and from accounts you can use this option, or you can enable this feature cost center. Now in Busy there is a unique feature called caption changing. So it will help you to implement the entry module according to your need. That means कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो cost center है, this cost center, I want to rename this cost center as a vehicle master, and I want to forward it to the favorite options, so that whenever I get login to the data, I can get the transaction, or I can get the entry module according to my need. So आप cost center को जो है आप
इसको आप जो है ऐड टू फेवरेट में जाके आप इसमें अपनी जो है इसको आप कैप्शन को चेंज कर सकते हैं, इसको आप रीनेम कर सकते हैं व्हीकल मास्टर, दैट आई हैव डन and I have forwarded it to the favorite options. You can see that vehicle master is written over here. So I've used the cost center feature, or I've used the cost center module to maintain my vehicle master. So I've created my vehicle names over here. Okay. And similar way, अगर आपने vehicle create कर लिया and then you are going for generating a daily trip entry. ओके, सो आप डेली ट्रिप एंट्री जो है हमने क्या किया है, आई हैव यूज दिस ऑप्शन कॉल मटेरियल इशू टू पार्टी. आई हैव रीनेम दिस ऑप्शन कॉल मटेरियल इशू टू पार्टी थ्रू कैप्शन चेंजिंग, and I have named this as daily trip entry. Means this is a sale challan entry module. I have renamed this as daily trip entry. So I've done it through the help of caption changing, which is available in Busy in the general configuration portion. So you can easily change the caption according to the need of your requirement. And आप जो इसको भी favorite में आप move on कर सकते हैं. And then from favorite you can go through the daily trip entry, or you can simply go to transaction and you can click on this add button to create your daily trip entry. For example, if I am going to create a daily trip entry, I'm mentioning the trip number. So I'm mentioning the trip number, suppose for example A7890. And I'm selecting the type sale challan. I'm selecting the sale type. Okay, now I'm selecting the party also. I can select the godown on which or through which godown I'm going to issue the material, or I'm going to do the movement of the material. Now I'm selecting a item called beggar's board. Now here you can see this extra information is coming, item description. So in Busy you will find by default there are 4-line description in the item master. So if you need to create more descriptions, and you can use this description for the additional information against the particular item. So for that you can do one thing. You can go to the voucher series configuration, and from the configuration portion you can go to voucher series configuration, and if you need to enable multiple fields for your daily trip entry, then you can go to material issue to party. You select the series, आप सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं, आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं. देन हियर यू विल फाइंड एन ऑप्शन कॉल्ड आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन. You can click on this configure button, and here as you can see that I have created some fields. I have mentioned the number of descriptions, so you can use maximum 20 line descriptions in the transaction level, and you can use these fields to get to get preview in your format also, in your daily trip format as well as in your invoice format also. So you can see that I have mentioned certain detail like truck number, RN number, date, booking from, permit number, because as I use this item description field, इसकी reason है कि normally whenever we generate a daily trip entry, there may be a certain option, or there may be a certain requirement comes that this material should be loaded from this station to this station, but there is another material that will be loaded from another station. So अगर आपको मतलब item wise description को changes करना है, if you need to fill up the description according to the item wise, then you can enable these features, or you can use these features. Or else if you said that no, my permit number, my loading station for particular daily trip is fixed, then I can use the optional field also. Okay, so I can use this, or I can create this field on optional field also. If I say that my item wise description will be different in single daily trip also, I need to change the loading station according to my item, then you can use item wise description for that. Now for example, you can say if I show you in the previous entries, you can see that I have mentioned certain loading station for this particular item. So for each and every item, whenever you select another item, this the additional description will also appear for that particular item. So you can change the additional descriptions for that particular item also. So you can see loading station, delivery station, truck number, जो भी मैंने truck number mention करके रखना है.
Okay, so RR number, date, booking from, permit number, wait serial number. So you can use this or you can create the field according to the need of your business. So these are the sample fields that I've created right now. Okay, so इसके बाद जो भी आपके फ्रेट रेट है पर पीस के अनुसार, अगर आप फ्रेट रेट लेना चाहते हैं, इफ यू नीड टू प्रोवाइड द फ्रेट रेट एज पर क्वांटिटी, देन यू कैन मेंशन द फ्रेट रेट एंड यू कैन generate this challan. So once you generate this daily trip entry or your challan entry, then here you will find to get the uh, to provide the vehicle numbers, because if you need to generate e-waybill from this daily trip entry, so you can mention your vehicle number, because you are generating a daily trip entry against a particular vehicle number. अगर आप एक पर्टिकुलर व्हीकल नंबर के अगेंस्ट पे आप डेली ट्रिप एंट्री कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअली व्हीकल नंबर वाइज ई वेबिल आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो ई वेबिल रिक्वायरमेंट के ऑप्शन आप एनेबल कर सकते हैं, एंड इफ यू प्रेस ओके देन इट विल अलाउ यू टू जनरेट ई वेबिल डायरेक्टली फ्रॉम हियर. लेट मी शो यू practically with a fresh entry. Let's suppose, for example, I'm creating a new entry with a different voucher number. I've mentioned this, all this detail, loading station, delivery station, truck number, RN number, booking number, permit number, wait. Next, I'm mentioning the freight rate and I'm saving this. Once I save this, इसमें जो है ट्रांसपोर्टर आप जो है ऐड न्यू करके क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पर आप अपने ट्रांसपोर्टर डिटेल, ट्रांसपोर्टर आईडी या व्हीकल नंबर मैंडेटरी होता है. अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं है, देन यू हैव टू मेंशन व्हीकल नंबर फॉर दैट. सो व्हीकल नंबर इन दैट केस गेट मैंडेटरी. सो इफ आई मेंशन व्हीकल नंबर, now you can see once I mention the vehicle number, if same vehicle number used in another daily trip entry, then if you can press F4 from here also, you can get the list of vehicle number. Okay, so you no need to type multiple times in your transaction. You can get it from the help list also. आपने जो है, आपको जो टू स्टेशन आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करना होगा. ये बेसिकली आपकी पिक हो जाएगी अगर आपने पार्टी मास्टर में स्टेशन मेंशन करके रखा है, ठीक है. पिन कोड आपके यहाँ पर बैठ जाएंगे. इसके बाद अगर आप ई वेबिल को एनेबल करते हैं, इफ यू एनेबल द ई वेबिल, and now if you press OK from here and you save this, here it will ask to generate e-waybill against the particular vehicle number for this daily trip entry. So if you click on this automatic option and if you press OK from here, it will first show you an option to check possible errors. अगर आप देख सकते हो कि अगर आपके सिस्टम में कुछ अपने एंट्रीज में कोई गड़बड़ तो नहीं किया है, अगर इनवैलिड है, कुछ मिसिंग है, तो आपको यहाँ पर बता देगा. Now if you can click on view and generate e-waybill, आप इसमें generate e-waybill में क्लिक करेंगे, आप इसको OK करेंगे, तो हाथों हाथ आपको यहाँ से e-waybill जनरेट हो जाएगा. And you can get it print on your screen also. If you press yes from here also, you can get the print preview of your e-waybill. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी व्हीकल नंबर मैंने यूज किया है, अगेंस्ट दैट व्हीकल नंबर यू कैन सी दी व्हीकल नंबर डिटेल आल्सो. इट्स शोइंग HJK001. तो आप व्हीकल नंबर के अगेंस्ट पे आप जो है ई वेबिल आप जनरेट कर पा रहे हैं डेली ट्रिप एंट्री पे. एंड ऑल्सो यू विल गेट एन ऑप्शन टू प्रिंट योर डेली ट्रिप एंट्री, एंड दिस इज ऑल्सो कन्फिगरेबल. आप चाहे तो आप अपने हिसाब से जो है डेली ट्रिप की जो है प्रीव्यू आप कन्फिगर कर सकते हैं थ्रू एडवांस डिजाइनिंग. Let me show you a sample format. I have mentioned this as बिल्टी. कोई इसको बिल्टी भी बोलते हैं. फाइनल बिल के पहले जो बिल्टी जो प्रोवाइड करते हैं डेली ट्रिप के माध्यम से टू द कस्टमर्स, दे यूज टू नेम एज this as बिल्टी also. So if I show you in preview format, you can see I have configured certain field over here. So you can see the options that is coming over here. So बिल्टी में आपका जो है डिस्क्रिप्शन चाहिए, वेट चाहिए, फ्रेट रेट चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो वो CN नंबर, फ्रॉम, इनवॉइस नंबर, ये सब डिटेल जो आप कन्फिगर कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ योर बिजनेस. सो यू कैन गेट इट कन्फिगर फ्रॉम एडवांस डिजाइनिंग that is available in configuration portion, invoice document printing, and in advance. Okay, so you can do the advanced designing for your delivery note, that is the daily trip entry module, that is the sale challan module, and also for sales invoice.
ओके। सो आपने जैसे डेली ट्रिप एंट्री कर लिया है, सो यू हैव डन योर डेली ट्रिप एंट्री, सो इफ यू नीड टू सी द डेली ट्रिप रिपोर्ट आल्सो, हमें रिपोर्ट भी देखनी होती है डे एंड पे, कितने ट्रिप में कौन सा मटेरियल, किस कस्टमर का मटेरियल लोडिंग पे गया था, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन पे गया था, परमिट नंबर क्या है, उसकी डिटेल क्या है। सो इफ यू get to see the list of daily trip entry, you can go through with the list also. So in this case you can also configure your report, that is through custom column. Right now you can see I have created a format name called daily trip report. So यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि इसमें मैंने कुछ फील्ड जो है पिक किए हुए हैं थ्रू कस्टम कॉलम ऑप्शंस. So here you can see date, the CN number, the trip number, the item detail, the destination, the truck number, the unit, the price. So you can see that I have picked some field as needed in the daily trip report or in the daily trip voucher list. इसमें जो है आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कस्टम कॉलम. अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है हमने डेस्टिनेशन कोलकाता मेंशन किया हुआ है, दैट इज पिकिंग फ्रॉम दिस लोडिंग स्टेशन, फ्रॉम दिस आइटम डिस्क्रिप्शन वन लाइन. So you can use the custom column option to incorporate your columns or incorporate your additional information in the report of daily trip report. So इसमें custom column में क्लिक करके आप अपने फॉर्मेट नेम डाल के आप ऐड न्यू करके आप यहाँ से अपने फील्ड को पिक कर सकते हैं. जैसे हम एक्सेल में करते हैं ना, कॉलम क्रिएट करते हैं हम एक्सेल में, कॉलम के हेडिंग के नाम देते हैं, उसके बाद हम कैटेगरीज में जो है फील्ड पिक करते हैं. So you can do it from this custom column. So this is a flexibility that is available in Busy to configure your report according to your need. Okay. So ये डेली ट्रिप एंट्रीज के अगेंस्ट पे अगर आपको पेंडिंग भी देखनी है, कभी कभी होती है कि हमें पेंडिंग देखनी होती है जो इन ट्रांजिट पड़ा हुआ है, जिसके अगेंस्ट पे अभी तक फाइनल बिल रेज नहीं हुआ है. सो यू कैन यूज दिस चलान, पेंडिंग चलान रिपोर्ट. You can get this tracking from this pending challan report also, because we are using challan entry module as a daily trip entry module. So आप इसमें party wise देखना चाहते हैं तो you can get it party wise. Okay, you select the party and you can get the pending daily trip entries against which no final bill has been raised. So it will show you over here. In this report also you can create your custom column, you can pick your fields according to your need. Okay, so जैसे आपने daily trip entry कर लिया, then if you need to raise the final bill, so you can see that I have used this sale entry and I've renamed the sale entry and I've mentioned the sale entry as a final bill and I've forwarded this field into the favorite options. So यहाँ पर हमने caption change किया, इसको नाम दे दिया final bill against daily trip. Okay. So if you click on this add option and you select, you mention the voucher numbers. Okay, and you select the type against challan. That means you want to pick multiple trip and you want to generate a single invoice or a final invoice against the particular customer. You select the sale type. ज़्यादातर सर्विस होते हैं ट्रांसपोर्ट में, सर्विस चार्ज लेते हैं 18% होते हैं या 5%, जो भी सर्विस होते हैं आपके एंड पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं. पार्टी में जो है आप पार्टी सिलेक्ट कर लिए, फिर आइटम में आके आप F11 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल या पेंडिंग डेली ट्रिप के नंबर आ जाएंगे, जिसको हम लोग चलान नंबर या डेट बोल सकते हैं. तो आप मल्टीपल चलान को पिक करके जो है आप फाइनल बिल रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें आप यस करेंगे तो इसकी डिटेल सारी पिक हो जाएंगी, लोडिंग स्टेशन, डिलीवरी स्टेशन, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रिप, यू हैव ऑलरेडी मेंशन ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन योर चलान एंट्री, इन योर डेली ट्रिप एंट्री, सो इट विल गेट पिक्ड ऑटोमेटिकली इन योर सेल इनवॉइस आल्सो. ओके, सो in this case what extra you will get to find in the sale voucher, that is the additional charges. That means 700 is the freight charges per quantity, or you can say per piece, and fuel charges. That means if you need to add some extra charges, this fuel charges, unloading charges, charges, or toll tax charges. Okay, so these extra charges you can configure through your compound markup. Okay, so in Busy we are having an options to create markup structure. So that I'll show you in the system, that कि आप अगर markup features को आप use करना चाहते हैं extra charges add on करने के लिए अपने invoice पे, so you can go to configure features and options, and in inventory you will find this option called compound markup. So you can use this compound markup to create additional charges.
तो आप मार्कअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आपने मार्कअप एनेबल कर लिया, यू हैव एनेबल द मार्कअप फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन इन्वेंटरी टैब, then you can go to administration master, miscellaneous masters, and then you go to markup structure. If I show you the charges that I have created, now you can see that I have mentioned a structure name called transportation charges. I have mentioned 4 markup. That's why I can change the caption of the market also. First charges will be fuel charges, second will be unloading charges, third will be tier, and fourth will be toll tax charges. And I can also set the structure of calculation of particular charges. That means कि fuel charges जो है मेरा absolute amount calculate करेगा, मैं एक बार में 1500 रुपये या 2000 रुपये में fuel charges पे डाल दूंगा. Unloading charges मेरी per quantity basis पे रहेगी. I will mention unloading charges on the basis of quantity. I can mention tier charges on absolute amount basis. I can use the toll tax charges as an absolute amount basis. So you can also create your structure, or you can also configure your structure for each and every markup. Okay, तो यहाँ से आपने कंपाउंड मार्कअप फीचर से एनेबल कर लिया, और फिर आपने यहाँ पर मिसलेनियस मास्टर में आके, एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर के अंदर मिसलेनियस मास्टर में आके आपने ऐड करके आपने यहाँ पर मार्कअप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया. ठीक है, और आपने हर एक मार्कअप स्ट्रक्चर के लिए आपने अलग अलग, आप जैसे मार के चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने सैम्पल 1 क्रिएट कर लिया. I created a structure name called sample 1, and I mentioned number of markup. I need 3 markup. First markup should calculate on the basis of absolute. First markup should be my fuel charges. Okay. Second markup should be my loading unloading charges, and this would calculate on the basis of per quantity. So in this way I can configure my markup. Okay, and once I configure this markup, or once I create this markup structure, I need to pick this markup option in my transaction module also. That means I need to enable this markup in my voucher series configuration, that is available under administration configuration, voucher series configurations. And then अगर आपको ये मार्कअप आपको सेल पे पिक सेट करनी है, इफ यू नीड टू एनेबल दिस मार्कअप इन योर सेल सीरीज, देन यू सिलेक्ट द सेल सीरीज, you click on voucher configurations, and then you enable this option called item wise markup, and you select the markup structure that you have created. Okay, so अगर आपने ये markup enable कर लिया, then you can get an option to add the extra charges in your sale voucher. Whatever freight you are picking from your daily trip, along with that freight you can use fuel charges. Let's say for example I mentioned fuel charges 1500. I'm mentioning unloading charges, like suppose 15 rupees per piece. I'm mentioning unloading charges. I'm mentioning tier charges of 1000 rupees. I'm mentioning a toll tax charges of 50 rupees. Okay, so ये आपको ऐड हो जाएगी. ऐसे ही आप दूसरे, क्योंकि दिस इज फॉर द पर्टिकुलर चलान, और ये दूसरा चलान के केस पे आपने पिक किया है, तो इसमें आप हो सकता है कि इसमें आप अदर इन्फॉर्मेशन डालें, इसमें आप फ्रेट रेट अलग लेना चाहे तो ले सकते हैं, या अगर सेम लेना है तो सेम ले सकते हैं. जो भी चलान में आपने फ्रेट मेंशन किया है, वट एवर फ्रेट रेट यू हैव मेंशन इन योर डेली ट्रिप और इन योर चलान एंट्री, दैट विल गेट पिक्ड इन योर सेल वाउचर, एंड देन you can add extra charges according to the invoice. You can mention fuel charges for this. You can mention unloading charges or loading charges for this. You can mention tier charges. You can mention the toll tax charges. Okay. Now, if you click apply tax, then GST will get calculated. And if you click on the save button, you can see that the challan number is also getting adjusted. And here you will find an allocation. That means if the sale is going to be generated against a particular vehicle number, so you can also select the truck number, or you can select the vehicle number against which you are going to generate this invoice. Okay, so आपको vehicle wise अगर आप income देखना चाहते हैं कि vehicle wise मेरा कितना billing हुआ है, okay, if I need to get a tracking vehicle wise that how much sale transaction I've done against a particular vehicle number, so I can allocate vehicle wise amount also in the sale transaction. Okay, now if I save this, from here you can also generate your e-way bill. Okay, so you can mention your vehicle number and you can generate your e-way bill from here also. Now if you click on the print option, that is the advanced designing format, जैसे कि आप देख सकते हो हमने डिजाइन सैंपल रेडी किया हुआ एडवांस इनवॉइस फॉर्मेट के माध्यम से. So in this case you will find that I have picked certain information that mostly needed in the transportation
invoice format. That is the CN number, or you can say the challan number, or the daily trip number, date, loading station, delivery station, RR number, RR date, truck number, charge quantity, rate, extra in the sense अगर आप लोडिंग टेयर सब मिला के आप एक्स्ट्रा आप अलग से कॉलम इंसर्ट करके रखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू व्यू इन योर invoice that these are the extra charges, or you can also insert individually also. You can create an individual column for toll tax, you can create an individual column through tier, or you can create an individual column for loading unloading charges. So these are configurable, so you can get it configured from your advanced designing also, and you can simply you can provide this kind of format to your customers. Okay, so once your final bill get raised, then comes the basic accounting part. That means you can record the, or you can track the outstanding party wise outstanding through this outstanding analysis report, that is bill wise, what freight is due from which customer, so you can get it from here, bill wise outstanding report. Okay, so you can select the particular company or particular customer against which you want to get the outstanding report. Okay, now this is the basic accounting you can get. Next is the expenses, recording of expenses against a particular vehicle. That means if any expenses, like say for example you have make a payment for diesel expenses, or you can say make a payment for toll tax expenses against a particular vehicle number. So whenever you are going to record an payment voucher, here also you can see you select your account ledger, you mention your amount, you select another account ledger, you can select multiple ledgers over here in your payment voucher. Once you click on the save button, then you can see you will find a option to allocate your amount according to your vehicle number wise, because you can use the vehicle number as a cost center over here. एंड आप देख सकते हो कि अकाउंट टोल टैक्स के लिए आप व्हीकल एलोकेट करो कि टोल टैक्स में इस व्हीकल के लिए 3000 रुपए खर्चा हुआ है. इफ यू प्रेस ओके, देन अनदर allocation box will appear for another expenses ledger, that is the diesel expenses. So for diesel expenses you can select the same vehicle number. For diesel expenses this amount has been allocated. Okay, so इससे help क्या होगा, what benefit you can get, you can track the expenses vehicle wise, or you can record the expenses vehicle wise, that you can get vehicle wise report. So you can see I have renamed this cost center ledger. I have renamed this cost center ledger as vehicle wise report. I have changed the caption, I have forwarded it to the favorite, so that instantly you can get this information. If you need to hide other menus, you can hide it. And for daily basis you can set your information, or you can set your modules in your favorite, so that whenever you get logged into your system or in your data, you get your required information in your screen. Now from here you can see if I want to check vehicle wise expenses for this vehicle number, I select the particular vehicle number, and if I want to select a particular account, that means if I want to see only diesel expenses for this particular vehicle, पूरे महीने में diesel expenses कितने खर्चे हुए vehicle wise, so I can select particular account. diesel wise मुझे बता देगा कितने खर्चे हुए vehicle के ऊपर में vehicle number, this cost center as name is coming. So if I need to check all the expenses related the particular vehicle, then I can select all account masters over here. And also if I press OK over here, then you can see against this vehicle I can get the expenses as well as the income that have occurred against this particular vehicle. मतलब कि इस vehicle against में कितना सेल में कितना आया हुआ है, उस vehicle के against में कितने हमने जो है पैसा रिसीव किया, क्योंकि जब हम रिसीव भी करते हैं कस्टमर पे, उसमें अगर हम व्हीकल एलोकेट करना चाहें, इफ आई नीड टू पिक द व्हीकल आल्सो इन द रिसीव वाउचर, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू रिसीव अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर, आई वांट टू ट्रैक ओवर दैट अगेंस्ट व्हिच व्हीकल आई एम गोइंग टू रिसीव द अमाउंट, then I can use, or I can allocate that amount in the cost center in receive entry also, so that I can get an entire history against that particular vehicle, that against that vehicle what amount has been gets what total amount has been get sold, and what amount I have collected, and what expenses I have done. So आपको entire information यहाँ से मिल जाएगा vehicle wise tracking के लिए कि कितने खर्चे हो रहे, कितने income हो रहे vehicle wise. तो आप इस cost center ledger report को आप maintain कर सकते हैं as a vehicle tracking के लिए. Other related reports जो होती हैं that is the
सैंपल रिपोर्ट्स जो होते हैं, नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो इसमें रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि चालान प्रोसेसिंग। तो हम डेली ट्रिप या पेंडिंग, जो कि इन ट्रांजिट पड़ा हुआ, जिसके अगेंस्ट पे आपने फाइनल बिल बनाया नहीं है, तो पेंडिंग चालान प्रोसेसिंग रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। सेल्स रिपोर्ट, जो आपने फाइनल बिल रेज किया, वट एवर फाइनल बिल यू हैव रेज, यू नीड टू गेट द सेल्स रिपोर्ट फ्रॉम बिजी, सो दैट इज ऑल्सो a common report you can get from busy and you can maintain. Cost center ledger, that is the vehicle wise record, expenses record you can say, the or the vehicle wise overall record. So against which vehicle, whatever sale entry you have done, what payment entry you have done, so you can get the entire history against a particular vehicle through this cost center ledger report. Outstanding analysis, to understand that how much amount is pending against that particular customer, and if I need to filter vehicle wise also, I can filter in the outstanding analysis. Okay, I can pick the vehicle name in the column also, in custom column, and I can filter from there also. Account ledger, if I need to get the party wise ledger report, I can get it. Other GST reports and returns you can maintain from busy, like GSTR 1 2 3B, GSTR 9. सो रिलेटेड जीएसटी रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स आपको जो है बिजी में मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दिस फीचर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द implementation process and the features that you can use for your transport business. Further, if anybody has any questions or queries, you can simply share your questions in the QA section. We will take up one by one your